the process of giving you more advices and making you wiser every day. So in the process of doing so, today we will dwell upon a topic of mutual funds and SIPs, because all of us intend to save for our later lives by means of different instruments available in the market. Few people prefer fixed deposits in the banks. Few people roam around in the market. Few people wants to explore mutual funds and SIPs. So if you see, we have started our financial literacy program under this channel, in which we are touching upon topic by topic, each and every topic which interests you, which if you can follow them, you can create a good chunk of amount for your later life. If you like last webinar which we have hosted, in which we have discussed about the house, the home loans, how you get the home loans at the minimum interest rate, or what are the ways by which you could save on the interest part. Similarly, we have also discussed in one of the webinar with Captain Vipul regarding whether you should go ahead and buy the properties or you should stay in rental houses. So different topics, of your interest. In the chain of that, now today we will be discussing that SIPs, SIPs with respect to the share market, SIPs with respect to your saving for life, and SIPs which gives you good returns in long term. So to understand it more, we have with us today Mr. Jitender Chaudhary. You might have witnessed a couple of webinars of his along with me discussing different financial aspects. So today's topic of discussion is SIP, and to discuss that with us, I welcome Mr. Jitender Chaudhary. Jitender, welcome to the show. Good evening, Major Varma, and good evening to all the audience, all the participants. Very interesting topic, and in fact, one of the hot burning topics which I come across every day almost. Yes. So we can start. Yes, please. Yes. So just to start, as I understand, SIP stands a form of mutual fund. So is there any difference? I would like you to clarify that to our viewers, that what exactly when we call SIP is vis-a-vis mutual funds. SIP is a mode of investing into mutual fund. Mutual fund is the ultimate instrument wherein the investment happens. So there are two ways in which we can invest into mutual fund. One is lump sum. Okay. So you have money one time, you can invest one time into mutual funds. The other way is you have a monthly amount which you spare every month, and then you invest that on a regular and consistent basis. So this regular and consistent basis of investing into mutual funds every month is called SIP. So the full form of SIP is systematic investment plan. Yes. So systematically every month a particular amount goes into a specific mutual fund scheme, and you buy units of that mutual fund. So how does this SIPs actually work? Because let's say if I'm investing some amount, so am I getting interim interest on that, or do I get anything and everything at the time of maturity? What happens when I'm sorry, I'm asking you multiple questions, but I'm just trying to understand this formula behind, this SIPs. So basically, as I told you initially, SIP is the mode of investment. So the SIP can be into a debt fund. Debt funds are the funds which give you returns which are in sync with the interest rate prevailing in the market. You can do SIP in equity funds which are linked to the share market. And there are hybrid funds also, wherein which is a mix of equity and debt, and you can do SIP into that also. So it basically depends on an investor's objective. So if somebody is looking for a long-term investment, say for his retirement, for their kids' education, something which is like 5 years, 10 years down the line, so they will be looking at creating wealth, creating higher returns than inflation, so they can go ahead with investing into hybrid or equity mutual funds. There they can run a monthly SIP into these funds. Somebody saving for, say, a short term, maybe 6 months, year, or 2 years, can run an SIP, a monthly SIP into a debt fund also. So SIP is the mode of investment. Ultimately, the money goes into the selected fund, whether an equity hybrid or an equity or a debt fund, selected by either you or your advisor who's advising you to invest into these funds.
So Okay. SIP is basically the mode, and the Hmm. instrument is the mutual fund that you've selected. Okay. Okay. And how it Well. benefits, adding Mhm. to it, uh, Mhm. uh, SIPs is a good mode of investing because for specifically for people who earn on monthly basis. So salaried employees who get monthly income, they have monthly expenses, and most of us have monthly expenses. So we are left with some amount, and Mhm. likewise we can dedicate some amount which is left, or we can align our investment in such a way that every month we devote or dedicate a particular amount towards these SIPs. So it's a Okay. convenient way of doing investment into mutual funds. So when we talk about continuously investing or monthly investing into SIPs, so is there any breakage or any kind of, in terms of, if you see life insurance and term insurances, if you opt for a monthly so-called billing plan, Mhm. so in that you have to monthly devote your energy and get that payments done. And sometimes if you miss on to the payments, then your policy gets lapsed. So, is there anything of such sort in SIPs? Like, let's say if somebody loses his job in between, Mhm. okay, and let's say there is a gap of, let's say, 6 months, before he starts earning again. Right. So, in that case, what happens with the SIP? Does it, hold good, or does it lapse Uh, like insurance See what policy? happens is, in case if there's a discontinuity of an SIP for regular 3 months, say if somebody started an SIP and because of any reason, maybe job loss or financial crisis or any other reason, the SIPs doesn't continue for regular 3 months, then the SIP stops automatically. And Okay. there's no repercussion effect because there's no charge, there's nothing of that Mhm. sort. So it just stops Okay. once you are like your finances are back to normal, and you're, in case if there's a job loss, you get a new job, you can restart the Mhm. SIPs again. So there's Okay. no charges, no exit loads, no nothing of that sort in case of an SIP. And you can stop it in between also in case of any emergency and get the amount back, whichever you have paid. Yes, you If can, unless so, and yeah. if so, are there any interest components which you get along with that amount which you have paid? See, it all depends on which kind of an instrument you've invested into, whether it's a debt fund, hybrid fund, or an equity fund. So if it's an Okay. equity fund, you can anytime, or in all these three cases, you can anytime stop and redeem the funds. The only thing which which it depends on is the market condition. So if market is down and your equity fund is also down, so you might have to withdraw at a lower value. So that's Yes. the thing that you need to look Okay, at. that is what exactly I was coming to. That if we see these mutual funds or SIP, or rather not the SIP, SIP is just an instrument, but the ultimate transaction happen between mutual funds and the market. So ultimate player or ultimate key to observe over here is market situation. Right. Now, if we see right now the markets are a little high, but let's say if I now start paying into, or rather opt for SIPs, and market falls, so instead of profits, I guess I will be recurring the losses more, isn't it? In fact, in the hindsight, you will benefit because since you've just started the SIP and market falls, you'll be buying at a better price and you'll be accumulating more units. In fact, whenever I start new with any client, I ask them to pray for themselves that market crash or correct, so that with the Okay. same amount they can accumulate more units. Yes, It's yeah, yeah. understood. But what I was talking about is after I start buying, the market falls. So it's okay. So when you start SIP Yes. into an equity fund, you should be mentally prepared that you need to run that SIP for long term. And for me, long Mhm. term is 5 years plus. So in five Okay. years, the market recovers. And in fact, a very good example would be what happened 2 years back in COVID crisis. Okay. In Yes. 2020, market crashed by almost 37%. People who Yes. started their SIPs in 2018-19, their portfolios were bleeding. They were down by almost like 25-30%. The 100 rupees that they have invested was down to almost 75-70 rupees. But Yes. when everything came back to normal, their portfolios were in plus of almost like I have seen their portfolios doing almost 24% in the positive side. Understood. So negative and volatility is not bad for us. It basically works in our favor in case if we use it well.
So if we Okay. continue with your SIPs for long term, we don't stop them in between. So people who could not make money out of this COVID crisis are the people who stopped their SIPs. जिन्होंने अपना Yes. एसआईपी बंद कर दिया ना, उनका पैसा नहीं बना. जिन्होंने अपने एसआईपी को कंटिन्यू करा, पेशेंस के साथ बैठे रहे और उस Mhm. पीरियड को जाने दिया जहां की पोर्टफोलियो ब्लीड कर रहे थे, रिटर्न आ नहीं रहा था, दिन ब दिन मार्केट गिरे जा रहा था, उन लोगों ने Mhm. पैसा कमाया. बट जो डर गए और डर के मारे अपने पोर्टफोलियोज को उन्होंने या तो रिडीम कर दिया, स्टॉप कर दिया, उन लोगों ने लॉसेस खाए. सो ऐसा जी. कभी नहीं हुआ. मतलब आप कभी का भी क्राइसिस उठा के देख लीजिए, लास्ट 30 years के क्राइसिस और क्रैशेस देख लीजिए. जनरली मार्केट जब बाउंस करता है तो वो जिस लेवल से गिरा है उस लेवल से भी ऊपर चला जाता है. जी. सो इफ यू जी. लुक एट एग्जैक्ट नंबर्स, मैं निफ्टी को फॉलो करता हूँ. निफ्टी 16,000 के आसपास था गिरने से पहले, कोविड से पहले, जी. मतलब जी. 12,000 के आसपास. वहां से गिर के 7,500 पे आया और वापस 16,000 से 18,000 तक भी टच करके गया. अभी जी. अराउंड 17,000 के आसपास निफ्टी ट्रेड कर रहा है, विच इज जी. मच हायर वेयर इट वाज व्हेन इट क्रैश्ड आफ्टर कोविड. तो अंडरस्टूड. हमें कुछ नहीं, हमें एज एन इन्वेस्टर क्या करना है, एक तो जब भी हम इक्विटी में एसआईपी चलाते हैं तो हमें लॉन्ग टर्म सोच के चलना है. हमें शॉर्ट टर्म करना ही नहीं. मेरा 5 साल से नीचे का पैसा इक्विटी म्यूचुअल फंड में आना ही नहीं चाहिए. सबसे बड़ी जी. गलती होती है कि हम अपना शॉर्ट टर्म का पैसा जो हमें कभी भी जरूरत पड़ सकती है उसको हम एसआईपी में डाल देते हैं या म्यूचुअल फंड में डाल देते हैं. अब जी. अगर मुझे पता है कि मैं आज 2022 में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहा हूँ और मुझे इस पैसे की 2027 से पहले जरूरत पड़ेगी नहीं, और कल मार्केट क्रैश कर जाता है, मैं कहता हूँ 50% क्रैश कर जाता है, 50% जी. नीचे गिर जाता है, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता. मुझे पता है मुझे तो 5 साल बाद पैसा चाहिए ना. और जनरली जितने भी क्रैशेस आते हैं ये 12 से 18 महीने तक ही सस्टेन करते हैं. आप कोई भी जी. उठा के देख लीजिए, 2008 वाला उठा के देख लीजिए, जब लीमन ब्रदर्स हुआ यूएस के अंदर. आप जी. मेजर क्राइसिस में आप कोविड क्राइसिस को देख लीजिए, वो भी 12 जी. महीने तक भी नहीं चल पाया. मतलब अगर हम मार्च अप्रैल को लेकर चले तो रिकवरी आपकी अगस्त सितंबर में शुरू हो गई थी. जी. जी. रिकवरी तो मार्केट पूरी तरह से कर गया. इनफैक्ट विद इन 2 years rather it has touched the new heights. But then the question still lies. So as they say in the market, nobody can find the bottom or top. So राइट. what is the ideal time to get into SIP or mutual funds? Is it when it is falling, or is it when it is reversing from the fall? See, timing the market is the most difficult thing. Nobody can do that. Biggest of the biggest investors can't do it. Even Warren Mhm. Buffett can't do it. So Yeah. for a retail investor like you and me, the best thing is to be disciplined, keep on investing. Highs and lows doesn't matter. You can change your strategies and fine tune them a little, but discipline is the most important thing. अगर आपने आज 2022 में डिसाइड कर लिया कि मुझे 10,000 का सिप चलाना है, एसआईपी चलाना है, तो अगले 5 साल उसको चला के रखिए. मैं आपको नंबर्स जी. दे सकता हूँ, मैं आपको डेटा दे सकता हूँ कि जिन लोगों ने 5 साल, 6 साल, 7 साल अपना एसआईपी चलाया है उन्होंने आज तक लॉस नहीं खाया है. जी. लॉसेस उन्होंने क्या किया आप है. एग्जाम्पल के लिए कोई लाइव एक एग्जाम्पल दे सकते हो, कोई डेटा पॉइंट्स दे सकते हो जिसमें कि हम ये देख पाए कि इन सारे दौर में 2008 से लेकर लेसे इंक्लूडिंग कोविड, ये एसआईपीज ने किस तरह से परफॉर्म किया है? Although let me clear this to the audience that we are the advisory platform and over here we do not sell any product. The only sole aim behind these webinars is to make you aware, is to give you some insight into different topics which interests you, which you should know. So just to clarify, we are not here to back any product or advertise for it. So Jitender ji, can you please give me some data points which shows the growth of mutual funds or SIPs in due time, in course of time? ठीक है, श्योर, आई विल डू दैट. आई विल शेयर माय स्क्रीन एंड वी कैन हैव अ लुक Sure. एट दीस नंबर्स. Yeah. तो यहाँ पे मैंने एसआईपी का कैलकुलेशन लिया है फॉर द लार्ज कैप फंड. एंड बाय नो मींस दिस इज माय एडवाइस, दिस इज जस्ट अ फंड फॉर टेकिंग इट एज एन इलस्ट्रेशन. सो ये एक फंड है, लार्ज कैप फंड है, एसबीआई ब्लू चिप, विच वाज लॉन्च्ड इन 2006. मतलब अगर इसका विंटेज देखा जाए तो ऑलमोस्ट ये फंड 16 साल पुराना है. Okay. और मैंने इसका जो इलस्ट्रेशन के पर्पज से लिया है, अजम्पशन ये है कि 2007 में हम लोगों ने 5,000 रुपए का सिप चलाया जुलाई में. 1 जुलाई 2007 वी स्टार्टेड अ 5,000 का सिप एंड वी Okay. कंटिन्यूड दैट सिप टिल द लास्ट डेट ऑफ दिस मंथ. मतलब 30 जुलाई तक हमने चलाया है इसको.
So total जी installment हमारा हो जाता है 181 installments जी and 5,000 each. So total invested value, if you can see, and I'll enlarge this screen a little. तो मेरा इन्वेस्टमेंट हो गया 9,05,000 पे. I जी hope this is visible. यस And as on today, the current value for this fund is 27,32,155. यानी ओके आपका पैसा ऑलमोस्ट 3 गुना हो चुका है पिछले ऑलमोस्ट 15 साल में, जिसमें कि आपने कुछ नहीं किया. मार्केट नीचे गई जी तो भी इन्वेस्ट किया, मार्केट ऊपर गई तो भी इन्वेस्ट किया, मार्केट कहीं नहीं गई तो भी इन्वेस्ट किया, बस इन्वेस्ट किया पिछले 15 साल. तो आपका जो जी रेट ऑफ रिटर्न निकल कर आता है कंपाउंडेड, वो निकल कर आता है तकरीबन 13.5%, 13.47 टू बी प्रिसाइज. okay okay तो बिना so कुछ किए. जी one of the thing which is prevalent again in the market lingo, if I can say, जी. that the profit which is not realized, the profit which you have not booked when the markets are high, ओके. are not the profits you have actually booked. So if you see the volatility in the market by which the instruments like mutual funds operate, so why can't we go for, let's say, short term investments? Why are you proposing a long term investment? Because in long term, vis-a-vis, if you compare it to the short term fluctuations, so I mean, what I'm trying to say over here is just like trading the mutual funds like any other stocks or the derivatives. See, first thing first, trading is not everybody's game. So not everyone is expert enough to trade either mutual funds or stocks or derivatives. So it requires a Okay. different skill set. And when you trade, Obviously. when you frequently buy and sell, your charges and your taxes magnify. तो यहाँ पे Yes. अगर मैं ये एग्जांपल देखूं तो 2007 से लेके 2022 तक सिर्फ इन्वेस्ट किया है, और इन्वेस्ट जी करके ऑलमोस्ट कॉर्पस का क्रिएट कर लिया 3 टाइम्स का. यहाँ पे अभी तक जी ना तो कोई टैक्स दिया है, ना ही कोई जी चार्जेस दिए. यस अगर यही कोई ट्रेडिंग करता तो पहला डाउट तो ये था, क्या वो उतने अच्छे से ट्रेड कर जी पाता कि 13% का रिटर्न जनरेट कर पाता. दैट्स वन क्वेश्चन. The other यस question is, if there's a frequent buy and sell, then there would be lot of taxes and lot of expenses added to it. तो ये रिटर्न वैसे भी कम हो जाता अगर इसमें से हम अपने टैक्सेस और अपने एग्जिट लोड्स और बाइंग चार्जेस को निकाल दे तो. यस पहले तो हमें ये डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि हम इन्वेस्टर हैं या हम ट्रेडर हैं. सो म्यूचुअल अंडरस्टूड फंड इज नॉट फॉर ट्रेडिंग, म्यूचुअल फंड इज फॉर इन्वेस्टिंग. ट्रेडिंग में अगर करना है तो सीखिए और सीधा डायरेक्ट इक्विटीज और डायरेक्ट ऑप्शंस में और फ्यूचर्स में जो आपको ठीक लगता है उसे करिए. बट वो बहुत बहुत वॉलेटाइल गेम है, उसमें हर किसी का सिक्का नहीं चलता है, मतलब वेरी वेरी अंडरस्टूड डिफिकल्ट. यहाँ तो अगर 100 लोगों ने ये पैटर्न फॉलो किया होता कि 100 लोगों ने 5,000 का सिप किया, 2007 से शुरू किया, 2022 तक कंटिन्यू किया, तो सबका यही रिटर्न आता. जी जी बट अंडरस्टूड ट्रेडिंग में तो डिफरेंट होता ना, जिसका स्किल सेट जितना अच्छा, जिसकी नॉलेज जितनी अच्छी, जिसकी ट्रेडिंग जी जितनी अच्छी, उसका उतना अच्छा प्रॉफिट, अदरवाइज लॉस. So I generally don't recommend getting into trading unless and until you have that kind of a skill set. This is a better way of investing. अच्छा, लॉन्ग टर्म क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं सब कुछ लॉन्ग टर्म ही होता है, शॉर्ट टर्म तो कुछ भी नहीं है ना. मतलब अगर आपको अपनी रिटायरमेंट के लिए प्लान करना है, and I'll जी take my example. I'm 40. My retirement would be another 20 years, at least 15 years. तो अगर मुझे 15 जी साल बाद रिटायर करना है तो ऑब्वियसली मुझे पोर्टफोलियो तो लॉन्ग टर्म ही क्रिएट करना पड़ेगा ना रिटायरमेंट के लिए. मैं शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो अंडरस्टूड बना के तो अपने लिए दिक्कत ही क्रिएट करूंगा, बिकॉज एवरी टाइम देयर वुड बी अ क्वेश्चन इन माय माइंड आफ्टर अ शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो कि अब क्या, अब इस पैसे का क्या करूं, अब इसे फिर कहाँ री इन्वेस्ट करूं. So we need to differentiate. So we need to kind of while investing understand our short term, medium term, and long term requirements. For long term, this is one of the most suitable investment option, and one of the यस most important, one of the most suitable investment style. So SIP चला यस दीजिए, छोड़ जाइए उसको, चला के छोड़ के भूल जाइए. कभी कभी मतलब साल में एक बारी दो बारी बैठ के उसको रिव्यू कर लीजिए, बस इतना ही करना है, इससे ज्यादा कुछ करना ही नहीं है. डेली डेली नहीं बैठना है इसके ऊपर. अंडरस्टूड अंडरस्टूड सो जैसे आपने बताया कि मिनिमम 10 साल या 15 साल या 20 साल, सो व्हाट इज द आइडियल टाइम फॉर इन्वेस्टिंग? इज इट एक्चुअली डिपेंडिंग ऑन द एज ऑल्सो? Yes, it is dependent on age also, on your financial goals also. So it depends on both the things, and it also depends on your risk profile. So if you are
aggressive and you can take risk, then you can maybe look at portfolio which is according to that. So you need to keep all three things in mind. आपका risk profile, आपकी age, आपके financial goals. इसके basis पे you can decide on which instrument, what time horizon, and for how long. Okay, okay, okay. So, is it possible for you? Is it possible for you to provide us with some data or some Excel sheet in future, in which one can calculate that how much he should contribute towards SIP if he is or she is looking for a long term investment plan. Apart from that, if you can also suggest that for what all things, for example, kids education, kids marriage, so what all are such things for which we can plan into SIPs? See, any goal So which, is it possible for you to yeah, provide us with that? I can do that, and I'll do it after the talk. And Sure, just to sure. give a glimpse of That it, we can. so just Yes. to give a glimpse of it, any goal which is at least 5 years away from today, so you can start an SIP in that. So nothing less than that. So at least your time horizon of investment should be 5 years. And in fact, I Understood. would say Understood. more than 5 years, not even 5 years, more than 5 years. Any goal. Understood. Understood. To all the viewers who will be, watching this recorded telecast on our YouTube channel. For them also, if you have any questions, do join our channel. The links will be provided in the description. Over here for the webinar, the link has been sent in your chat box. You can join our Telegram channel. You can subscribe to our YouTube channel where you can watch the repeat telecast also. And if you have any questions, you can directly get connected to us on the prescribed channels and the links. We will connect you directly to our experts where you can ask them specific questions. Okay, so moving forward, Jitender, well, we have discussed about the importance of market. So do one has to really wait for market to fall, or is that the right strategy to enter into this SIP module? Not really. You can't time the market. There's no one who's expert enough to know exactly when the market will fall and how for how long it will continue falling and to what extent. So very difficult. मतलब बहुत ही वो क्या कहते हैं कि कुछ ऐसी पावर्स चाहिए होंगी उसके लिए सुपर ह्यूमन जो आप प्रेडिक्ट कर पाए ये सब चीजें जो कि होता नहीं है। Understood. तो Understood. यहाँ पे मैं एक स्ट्रैटेजी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा जस्ट टू मेक दिस मोर फ्रूटफुल फॉर द ऑडियंस. This is what Mhm. I follow, and this is one of the strategies that I use for me and my clients while investing into either equities or mutual funds. And I Okay. hope that would help the audience to kind of align their investment also in this style. So मैं वापस से अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ और आपको स्ट्रैटेजी शेयर करता हूँ. Sure. So I basically follow a 70-30 rule. So wherein I invest whenever I start my SIP or whenever I do an SIP for my client, I do a 70% SIP in equity fund and simultaneously start a 30% SIP into liquid fund or the debt fund. So these funds are those funds which don't invest into stocks. They invest into instruments which are with a fixed rate of return and are Mhm. generally not aligned with the market. So market goes up and down. These funds are not impacted by that. तो मैं Okay. 70% पैसा तो उन फंड्स में डालूंगा जो वॉलेटाइल रहेंगे, जिनका काम ही है ऊपर और नीचे जाना मार्केट के साथ. और तीस Mhm. परसेंट पैसा मैं डालूंगा उन फंड्स के अंदर जिसमें वो सिक्योर रहेगा, कैपिटल प्रोटेक्टेड रहेगा, कुछ मेरे को एफडी के बराबर का रिटर्न देता रहेगा. Okay. और बेसिकली ये स्प्लिट करने का लॉजिक ये है कि अगर मान लीजिए दो केसेस हो सकते हैं, या तो मार्केट ऊपर होगा तो मैं 70-30 को चला के रखूंगा, मैं इसको बंद नहीं करूंगा, 70-30 वुड कंटिन्यू. सो इफ आई एम Okay. डूइंग एन एसआईपी ऑफ 10,000 रुपीज, मेरा 7,000 का एसआईपी इक्विटी फंड में और 3,000 का लिक्विड फंड में चलता रहेगा. साथ में मैं क्या करूंगा, अगर मुझे काफी टाइम हो गया ये करते हुए तो मैं थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लूंगा और टू द एक्सटेंट ऑफ 30%. तो Okay. इसको भी अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, मान लीजिए मेरे पोर्टफोलियो की वैल्यू हो गई है आज की डेट में 5 लाख रुपए और उस पांच जी लाख रुपए में मेरा प्रॉफिट है 2 लाख रुपए, तो मैं उस दो जी. लाख रुपए का 30% बुक करके वापस से लिक्विड फंड में सेव करके रख लूंगा. Okay. एंड आई Okay. वेट फॉर द मार्केट टू करेक्ट और क्रैश. अच्छा, जब भी मार्केट करेक्ट होता है, क्रैश होता है, इसका पता चलना शुरू हो जाता है. जैसे कि अभी पिछले 5-6 महीने में जो इवेंट्स हुए, फेड ने जी. रेट इंक्रीज किया, रशिया यूक्रेन के बीच में वॉर हुई,
तो ये ना जी ये सिचुएशंस दिखनी शुरू हो जाती है कि हाँ ये ना कुछ नेगेटिव न्यूज़ हैं जिसकी वजह से मार्केट करेक्ट करेगा, या जी कोविड वाला सिचुएशन आया तो मार्केट क्रैश किया, तो ये सिचुएशन दिखती है, वहां पे आप इस 30% पैसे को यूज करते हो। तो जब मार्केट जी ऊपर है तो आपने 70% अपना इक्विटी फंड में और 30% डेट फंड में अपना चला के रखना है। अगर आपके पोर्टफोलियो में प्रॉफिट आ गया है तो 30% को बुक करके आपको वापस से लिक्विड फंड में डाल के रख लेना है उसको, और वेट करना है मार्केट को करेक्ट करने के लिए। दूसरा जी कंडीशन हो सकता है कि मार्केट गिर गया है, मतलब एक कंडीशन था मार्केट ऊपर जा रहा है, दूसरा कंडीशन है मार्केट नीचे जा रहा है। तो जब मार्केट नीचे हम्म जा रहा है तो मेरा 70-30 तो चलता रहेगा, मैं इसको बंद नहीं जी करूंगा। बट जो पैसा मैंने हम्म एक्यूमुलेट किया है अपने 30% वाले सिप में, जो मेरा डेट फंड में चल रहा था, मैं वहां से उठा हम्म के पैसा मूव करना शुरू कर दूंगा वापस से इक्विटी फंड की तरफ। ओके और या फिर जो मैंने 30% अपना प्रॉफिट बुक किया था, जो हमने पहले वाले केस में देखा है, मैं उस पैसे को भी हम्म वापस से इक्विटी फंड की तरफ बाइंग में लगा दूंगा। जी तो बेसिकली मैं जी कर क्या लेकिन रहा हूँ। लेकिन अगर आप देखें तो ये जो एसआईपी है ये तो लॉन्ग टर्म चलने वाली चीज है, और लेट्स से 2 महीने के या सॉरी 2 साल के अक्यूमुलेशन के बाद इट विल रीच टू सम सब्सटैंशियल अमाउंट. राइट। So when the market is falling राइट। and the rates of the instruments are going lower, या so when I buy that I will require that much amount of substantial value to average it out, right? नॉट रियली इन केस ऑफ एस आई पीज, आप तो 5,000 से भी बाइंग कर सकते हो ना। 5,000 रुपीज इज जी ऑल्सो इनफ टू बाय अ म्यूचुअल फंड स्कीम। but will that make that much of difference? इट विल ओवरऑल बिकॉज ओवरऑल कॉस्ट तो कम हो जाएगी, ओवरऑल कॉस्ट तो कम हो जाएगी एवरेज आउट के प्रिंसिपल के हिसाब से, बट will that make so much of a difference? Let's say for an instrument, if I have got 1000 units bought जी during the particular term, जी। and when the market falls I buy let's say 10 or 20 units or हम्म, 50 units or हम्म, 100 units to that extent, जी। so that will not make much of a difference. I agree it will make a difference in long term when the market reverses. See, it's a continuous process. You will be doing it again and again whenever the market goes up, whenever the market goes down. So this would Okay. be a continuous process. So if I take a time horizon of say 10 years, this kind of opportunity you Mhm. can get maybe thrice a year, or maybe a Yes. major crash once in 5 years. और अगर ऐसा Mhm. अपॉर्चुनिटी जैसा 2 साल पहले आया जहां मार्केट ने सीधा 37% का नोज डिप लिया, वैसा अपॉर्चुनिटी जी, आपको मिल गया और आपके पोर्टफोलियो में ये प्रॉफिट बुक करके या 30% का एसआईपी चला के पैसा एक्यूमुलेटेड है, मान लीजिए ज्यादा जी, नहीं है, तो आपने कुछ नहीं किया, 2-3 लाख रुपए आपने सेट असाइड करके लिक्विड रख लिया। वो दो तीन जी, लाख रुपए जैसे ही आप 30% ड्रॉप मार्केट में या 50% ड्रॉप मार्केट में डालोगे, तो एकदम से आपके पोर्टफोलियो को शूट कर देगा वो। और इसको जी, मैं एक एग्जाम्पल के साथ दिखाऊंगा भी, जो हमने फंड की अभी बात की थी, मैं उसमें आपको यूज करके दिखाऊंगा कि कैसे होता है। तो जी, बेसिकली आपने ये रूल अप्लाई करना है कि पहले तो आपको 70-30 के रेशियो में एसआईपी चलानी है। 70% जी। इक्विटी फंड में चलानी है, 30% डेट फंड में चलानी है, लिक्विड फंड में चलानी है। अगर आपको हुँ, लग रहा है मार्केट अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है, तो आपको कुछ नहीं करना है, चुपचाप बैठना है, वेट करना है मार्केट के क्रैश करने को और एसआईपी को चलाते हुए रखना है। मतलब ओके, ज्यादा लेफ्ट राइट नहीं करना है उस टाइम पे। अगर आपका अंडरस्टूड। कुछ प्रॉफिट हो गया है पिछले कुछ सालों में, उसका हुँ, कुछ हुँ, परसेंटेज आप बुक करके ले लीजिए। जो आपका सवाल था कि जब तक प्रॉफिट बुक नहीं करते तब तक वो हमारा है ही नहीं, तो आप जी, प्रॉफिट बुक कर लो जब आपको लग रहा है कि ये सही टाइम है, इस टाइम पे मार्केट ओवर वैल्यूड लग रहा है और हुँ, सिम्टम्स हुँ, दिखने शुरू हो जाते हैं, वो सिचुएशंस दिखनी शुरू हो जाती है कि हाँ कहीं ना कहीं मार्केट जो है वो थोड़ा ओवर वैल्यूड हो रहा है, तो अपना प्रॉफिट थोड़ा सा बुक करके रख लीजिए। मैं आपका सारा प्रॉफिट नहीं बुक करा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ 30% निकाल के रख लो, 70% जी। वही रख के रहने दो। तो कुल मिला के मतलब एसआईपी ही क्यों ना हो, आपको एक्टिव रहना जरूरी है, आपके पोर्टफोलियो को देखना जरूरी है, और सिचुएशन के हिसाब से अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टेंसेस एंड द मार्केट एक्शंस यू हैव टू टेक द कॉल. देखो, अगर आपको वॉलेटिलिटी को अपने फेवर में लेकर आना है, जनरली क्या होता है ना, वॉलेटिलिटी के केस में ही हम लोगों को सेटबैक्स मिलते हैं। जितने भी जी, रिटेल इन्वेस्टर्स हैं ना, वो मार्केट को ऊपर जाते हुए उनको कभी दिक्कत नहीं होती है। मतलब इफ मार्केट इज गोइंग वन वे एंड दैट इज जी, हाईवे, ऊपर जा रहा है, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। प्रॉब्लम तब जी, होता है जब मार्केट नीचे की तरफ जाता है, उनके लिए, जी, उसके लिए उनको काउंटर करने का कोई स्ट्रैटेजी नहीं होता है। गिर रहा है जी, तो जी, क्या करे, तो गिर रहा है तो उनको एक ही चीज समझ में आती है, सब कुछ बेचो और निकल के बाहर आ जाओ, जो कि जी, सही स्ट्रैटेजी नहीं है। क्योंकि जी, जब जी, भी आप
जब भी आप गिरते हुए मार्केट में अपने आप को एग्जिट करेंगे ना, तो आपके लिए वापस से री एंटर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है. मुश्किल हो जाता है. I've अंडरस्टूड. never seen people exiting the market when markets are at low and coming back into the equity markets. एक बार निकल गए जी तो निकल गए, फिर दोबारा नहीं आते, जी. क्योंकि हिम्मत ही नहीं होती So ना. yes. So now my next question roams around that when can we withdraw the amount? Is there any maturity which happens at the end of tenure, or we can keep keep it for let's say 100 years and just sell it whenever we want the money? Uh, See, it depends on two things. One is there are two ways in which you can handle this. One is if you have aligned your investment to a goal, say for example your retirement, then withdraw the funds only when that goal is there. तो अगर मुझे पता Understood. है मुझे 15 साल बाद चाहिए मेरी रिटायरमेंट के लिए, तो मैं तभी विड्रॉ करूंगा ना, अभी से विड्रॉ करके उसका क्या फायदा. हाँ, जी इतना जरूर हो सकता है कि आप आज विड्रॉ ना करके, या मतलब रिटायरमेंट के 1-2 साल पहले थोड़ा सा उसको ना सेफ गार्ड करना शुरू कर दो. जी So we are sitting in 2022 and I need money in 2037. तो मैं 35 से स्ट्रैटेजी चेंज करना शुरू कर दूंगा ना. मैं उसको थोड़ा थोड़ा करके अपना प्रॉफिट बुकिंग करके सेव करता रहूंगा, मे बी एफडी करा दूंगा या डेट फंड में डाल दूंगा, तब सेफ गार्ड करूंगा. आज से सेफ गार्ड करके कोई फायदा नहीं, आज तो इन्वेस्ट करने का टाइम है. So understood. one way is align it to your financial goals and wait till that financial goal of yours. Second thing is keep a target. तो अगर मैंने अपने पोर्टफोलियो पे टारगेट रखा है, मेरे को 18% का या 15% का रिटर्न चाहिए, तो वो रिटर्न आते के साथ ही प्रॉफिट बुकिंग कर लो, अपना कैपिटल छोड़ दो, प्रॉफिट एग्जिट कर लो. बट जी ज्यादा अच्छा तरीका, सेंसिबल तरीका इज अलाइनिंग टू अ फाइनेंशियल गोल. फाइनेंशियल गोल के साथ अलाइन होगा तो आप ज्यादा उसको मीनिंगफुल बना पाएंगे, वरना ये परसेंटेज चेज करना तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है. वो ना, वो ग्रीड जी वाला फैक्टर आ जाता है. जैसे 15% पे आएगा ना पोर्टफोलियो, लगेगा यार ये 18 भी जा सकता है, चलो बैठे रहो. 18 पहुंच जी जाएगा तो 20 की लालच होगा, 20 पे पहुंचेगा तो फिर वो क्रैश कर जाएगा, वो वापस 10 पे आ जाएगा, तो फिर वो निकल ही जी नहीं पाएंगे कभी भी. तो ज्यादा देर चेजिंग दोस परसेंटेजेस, इट इज बेटर कि आप अपना एक गोल रखो कि 2030 में मुझे पैसा निकालना है स्पेसिफिक पर्पज के लिए, और उससे 1-2 साल पहले उसको रियलाइन करना शुरू कर दो. जी जी. तो क्या आपने कोई फॉर्मूला बनाया है कि एक मिडिल क्लास सैलरी person, how much he should contribute? I understand that it is in correlation to your final goal, that what exactly you want to achieve at the end of the term, at particular year, or a particular tenure. But how much should be the minimum? What can be the calculation one can perceive? How he should go ahead with this SIP? सी, ऐसा कोई परसेंटेज नहीं है. इट ऑल डिपेंड्स ऑन अ पर्सन और एन इंडिविजुअल्स रिक्वायरमेंट्स एंड गोल्स. हाँ, इतना है कि अगर आप Mhm. थंब रूल फॉलो करना चाहें तो आप ये मान सकते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में कम से कम 25% इक्विटी होना चाहिए. तो 25% का कंट्रीब्यूशन आप कर सकते हैं उस तरफ, अपने टोटल टोटल इन्वेस्टमेंट का जो आप मंथली बेसिस पे कर रहे हैं. सो इफ योर सेविंग कैपेसिटी से 10,000 रुपीज एंड यू आर अ बिगनर, तो एटलीस्ट कम से कम 2500 रुपए से स्टार्ट करिए और धीरे धीरे उसको स्टेप अप करते रहिए. स्टेप अप एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. हम लोग वो जनरली उसको फैक्टर इन नहीं करते. आपको हर साल अपनी इन्वेस्टमेंट को एक सर्टेन परसेंटेज से बढ़ाना चाहिए, चाहे वो इक्विटी इन्वेस्टमेंट हो या बाकी इन्वेस्टमेंट हो. और स्पेशली इक्विटी को क्यों? क्योंकि इक्विटी वेल्थ क्रिएटिंग एसेट है. तो एक Mhm. इन्वेस्टमेंट ऐसी है जहां से आपको एक सब्सटैंशियल सा रिटर्न जनरेट हो सकता है. अगर आप उसको स्टेप अप नहीं करेंगे ना, तो आपका वेल्थ क्रिएशन स्लो हो जाएगा. और वो मैं आपको भी एक एग्जांपल से भी दिखाता हूँ कि कैसे स्टेप अप जो है वो आपकी इन्वेस्टमेंट को एकदम से कैसे लॉन्ग टर्म में शूट कराता है, कैसे एकदम जी से काफी वेल्थ क्रिएशन होती है. तो एक बार मैं फिर से वापस अपनी स्क्रीन शेयर करके आपको एक एग्जांपल जी दिखाता हूँ. जी सो अभी जो हमने पहले एग्जांपल देखा था, वो देखा था सेम फंड एसबीआई ब्लू चिप. उसमें 5,000 का सेव पिछले 15 साल में कुछ नहीं किया, सिर्फ 5,000 हर साल कंट्रीब्यूट किया. 9,05,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट बिकेम 27 lakhs विद परसेंटेज ऑफ 13%, परसेंटेज रिटर्न ऑफ 13%. अगर इसी में ही हमने हर साल 5% या 10% इसको इंक्रीज किया होता, तो कितना फर्क पड़ जाता है वो आपको एक यहाँ पे दिख रहा होगा. तो पहले वाला अगर आप रो देखेंगे तो इसमें बहुत क्लियरली दिख रहा है 9,05,000 का इन्वेस्टमेंट, वही 27 लाख का वैल्यू, ऑलमोस्ट जी 18 लैक्स का ग्रोथ हो गया. मतलब ये आपका आपका प्रॉफिट आ गया. अगर जी आपने इसी को ही हर साल 5% से इंक्रीज किया होता, आपका इन्वेस्टमेंट हो गया होता 9,05,000 की जगह 12,23,000 रुपए, बट आपका कॉर्पस बन गया होता 34 लाख रुपए, ऑलमोस्ट सिक्स जी एंड हाफ लैख रुपीज एडिशनल. by investing जी just another like 3 lakh rupees, that too spread over 15 years, आपका कॉर्पस इज इंक्रीजिंग बाय ऑलमोस्ट 6.5 lakh rupees.
अगर इसी को ही आपने जी 10 से इंक्रीज किया होता, मतलब इसका मतलब ये है कि आपने मान लीजिए इस साल 5,000 रुपए से शुरू किया, नेक्स्ट ईयर आपने उसको 5500 कर दिया, उसके अगले साल आपने 6,000 कर दिया, मतलब एवरी ईयर 500 रुपीज से आपने उसको इंक्रीज किया होता, तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होता 15 लाख रुपीज, 15.5, एंड योर जी करंट वैल्यू वुड बी 40 lakhs। 6 लाख हम्म, रुपए एडिशनल इन्वेस्ट करके ऑलमोस्ट 13 साढ़े 13 लाख रुपए जी एडिशनल आ गया। जी 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 सो स्टेप अप करना बहुत जरूरी है। obviously it will step up. Yeah, step up is one option by which we can certainly, and it is advisable also, because with the increase in inflation, with the increase in living standards and the increase in salaries and all, we can certainly go ahead with some step up. We can plan about that, and we can obviously reap the fruits at the end of the term. So this SIP is it possible for even a worker who are like daily wages worker, or who's not earning a fixed amount every month, so is it advisable for them also See, to it go is ahead with advisable for such everyone, savings? but there are few prerequisites. One, you need to have a bank account with the facility of auto debits. Mhm. So someone who doesn't have a bank account and there's Mhm. no provision of auto debits can't get into SIP, because every month there's an auto debit which happens to your bank account. तो ये कुछ प्री रिक्विजिट्स अगर Yep. मतलब सेटिस्फाई हो रहे हैं तो कोई भी कर सकता है, मतलब डेली वेज, समवन हु हैज। जी। और जो दूसरे, हाँ, और जो दूसरे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स है, जैसे कि फॉर एग्जांपल फॉर गर्ल चाइल्ड, गवर्नमेंट हैज कम अप विद सुकन्या योजना, and instruments such as fixed deposit or other, somebody tries to invest in life insurance, although that's a different connotation altogether. But yes, there are different instruments available in the market. So what do you suggest? SIP is the best amongst them? For example, let's say if I have a girl child and I am investing, it is a kind of SIP only, for a particular period of time, particular amount I am investing towards her. So is it possible that these SIPs have more return than those government funded or government backed schemes? Obviously, yes, but what you need to look at is there's a degree of risk associated to these SIPs or mutual funds. So if you're okay with that risk in terms of volatility of the market, and today we are here to discuss that Mhm. volatility only in case of SIPs, अगर आप उस volatility को हैंडल कर सकते हैं कि मेरा पैसा ऊपर और नीचे जाता है डेली बेसिस पे, और नीचे जाने से मुझे बहुत ज्यादा परेशानी नहीं हो Mhm. रही क्योंकि बहुत लंबे टाइम तक मुझे इन्वेस्ट करना है, then it's a good instrument. Otherwise, generally, you need to have everything. Some money into Sukanya Smriti, some into FDs, and some money going towards Oh, mutual fund SIPs also. Uh, you can't just set off one instrument to other. So every instrument has some advantage or disadvantage. So you should have everything in your portfolio. आप ना तो इक्विटी को पूरी तरीके से इग्नोर कर सकते और ना ही इन फिक्स्ड रिटर्न वाले इंस्ट्रूमेंट्स को पूरी तरह से इग्नोर कर सकते। होने सब चाहिए, किस रेशियो में होंगे वो डिपेंड करेगा आपकी रिक्वायरमेंट पे और आपके रिस्क एपेटाइट पे। तो अगर आप कंजर्वेटिव yeah, हैं, कंजर्वेटिव yeah, इन्वेस्टर हैं, अगर आपको लगता है कि मैं बहुत ज्यादा रिस्क नहीं ले सकता हूँ, मेरे को पैसा ऊपर जाता हुआ तो अच्छा लगता है बट नीचे जाता हुआ मुझे दुख देता है, मेरे को परेशानी देता है, मुझे रात की नींदें खराब करता है मेरी, तो फिर आप इक्विटी को कम यानी म्यूचुअल फंड्स को कम रखते हैं, आप इस तरीके के सेफर इंस्ट्रूमेंट्स को ज्यादा रखते हैं अपने पोर्टफोलियो में। बट अगर कोई जी मेरे जैसा जी है जिसको लगता है कि नहीं मैं ये हैंडल कर सकता हूँ, मैं अपने पोर्टफोलियो को 30% नीचे जाता हुआ भी देख सकता हूँ क्योंकि मुझे पता है मेरे को 25% मार्केट से कमाना है, तो मैं मेरी म्यूचुअल फंड्स में ज्यादा इन्वेस्ट करूंगा, इस तरीके के फिक्स इंस्ट्रूमेंट्स को कम रखूंगा। So it all depends on your requirements and your risk profile. There's no one fit solution to everyone. So जितने लोग यहाँ पे अभी इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, सबका रिस्क प्रोफाइल डिफरेंट है, सबकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, तो ऑब्वियसली सॉल्यूशन एक नहीं हो सकता। तो अगर मैं कह दूं हाँ वन फिट सॉल्यूशन है, सबको एसआईपी करा लेनी चाहिए, तो वो गलत है। डिपेंड्स ऑन देयर जी रिक्वायरमेंट्स, देयर ऑब्जेक्टिव्स एंड देयर रिस्क प्रोफाइल। किसी को इक्विटी ज्यादा पसंद आएगा, किसी को कम पसंद आएगा, किसी को सुकन्या समृद्धि में 15 साल पैसे डाल के 7% में खुशी मिलेगी, किसी को 5 साल म्यूचुअल फंड में डाल के 25% में भी खुशी नहीं मिलेगी।
So it all depends on Ji. that. Understood. 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 Yes, Jitender ji, actually, I am finished with my questions. And well, I am actually seriously thinking about getting into SIP, but because till the time we were in army, so we had a different provident fund scheme over there, which was furthermore beneficial. However, now as we are out of it, so now I am specifically trying to find the instrument in which I should go ahead with. So apart from the stocks and the bonds, mutual fund and SIP is obviously one thing in which my I interest in, and a lot of our viewers also. Those viewers who want to get more details or who have questions, not only today but in future also, so they can please join our Telegram channel and ask their doubts there. We will connect you to our experts. So, Jitendra ji, before we go ahead towards question and answer, do you have anything else to say? Uh, uh, See, the only thing that I want to add to this is again I'll reinforce my point uh, of getting into SIPs only when you're looking at a long-term perspective in your portfolio. Short-term Yes. SIPs can backfire. तो ऐसा नहीं है कि SIP एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आपको कभी लॉस दे ही नहीं सकता है. जी, SIPs के understood. केस में भी लॉसेस हो सकते हैं अगर आपका टाइम होराइजन छोटा हो, मतलब इफ यू आर इन्वेस्टिंग फॉर द शॉर्ट टर्म, because these जी, short term volatilities can impact the SIP, the monthly investment that you're doing in mutual funds. बट अगर आप प्रॉपरली अपने रिस्क प्रोफाइल को समझ के, अपने टाइम होराइजन और टेन्योर को समझ के इन्वेस्ट करते हैं और लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव रखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे दो चीजें. एक तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, दूसरा है कंसिस्टेंसी. अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि मुझे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, इक्विटी में SIP चलानी है, तो आपको एक तो पेशेंस रखना पड़ेगा और आपको दूसरा कंसिस्टेंट होना पड़ेगा. यू कांट जस्ट ब्रेक योर SIP, स्टॉप योर SIPs इंटरमिन, कि आज बंद कर देता हूँ, कल फिर चला दूंगा, परसों फिर से बंद कर दूंगा, फिर चला दूंगा, तो उससे वेल्थ क्रिएशन नहीं होगी. अगर आप लॉन्ग टर्म सोच के चलते हैं, 5 7 10 साल, 5 साल में जनरली क्यों कहा जाता है, 5 साल में कम से कम आपको एक करेक्शन वाला टाइम दिख जाता है. मतलब मार्केट एक बार ही आपको वो रुख दिखा देगी जहां पे वो नीचे जाएगी और आपका थोड़ा हार्ट बीट बढ़ेगा. जब आप उस फेज को टेक केयर कर लेते हैं, यू गो थ्रू दैट फेज, देन यू अंडरस्टैंड कि हाँ यार, मार्केट जब गिरता है ना तो इतनी धक धक होती है. उसके बाद यू जी, रिलैक्स, यू सी योर वैल्यूएशंस गोइंग अप एंड यू अंडरस्टैंड कि हाँ, किस तरीके से मंथली बाइंग हो रही है, क्या एवरेजिंग होती है, कितना मेरा पोर्टफोलियो वैल्यू करता है. देन ऑटोमेटिकली यू गेट दैट पेशेंस कि हाँ यार, यहाँ पैसा बनता है. देन यू पुट दैट SIP फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन ऑल्सो. तब आप सोचते हैं 7 साल, 10 साल, 15 साल के लिए. पहला जो माइलस्टोन है वो है 5 साल. कम से कम जी, 5 साल के लिए रहिए, 5 साल तक इन्वेस्ट करिए, उसके बाद जज करिए कि इसमें वापस से रहना है, बढ़ाना है इसको, इन्वेस्टमेंट को, या इसको यहीं पे छोड़ के वापस अपनी जो ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट है उसमें ही खुश रहना है. सो योर understood. इन्वेस्टमेंट शुड बी 5 years at least. Yes, yes, yes. So that is the message, ladies and gentlemen, from our expert regarding SIPs, that you have to be consistent, you have to be patient, and not, you know, panicking when the market is falling. So it is obviously a very good instrument. If planned accordingly, it can yield beautiful and handsome returns. So, ladies and gentlemen, before we go ahead with our question and answer session, let me just give you one of our enterprise. Now, WAST is one of the NGO founded by Colonel Parminder Kaur. She was a doctor with Army Medical Corps, and now she is working as Joint Director Disability in AGIF, that is Army Group Insurance Fund. Ladies and gentlemen, the NGO deals with neonatal mortality, in which she has reached out to almost 23,000 women all across the country and taken care of their health and hygiene, briefed her, provided with the assistance, whatever she could. So, ladies and gentlemen, it's a special request. Please go through WAS's website. Please find out the good work she's doing and contribute whatever you can towards the noble cause. So that is for WAST. Now coming back to the question and answer session. So ladies and gentlemen, any questions you have, this is the time. You can raise your hand, you can type your questions in chat box, and those viewers who are viewing this online recorded session, they can simply put down their questions in comment box or join our Telegram channel
and ask the questions directly with the experts. Do join our Telegram channel. Do subscribe to our YouTube channel. See you again. Thank you, Thank Jitender ji, for coming on this platform and giving us all the insights into SIP. Next episode, we will come back with some more information, and we will look forward to you joining that. you, Mr. Varma. Thank you, Thank you. Jitender ji. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you all, Thank you, and have a Jitender. good night. You gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on